માટી ધસી પડતા વડસર બ્રિજ નીચે 100 ફૂટથી મોટો ભૂવો પડ્યો છે, જેથી લોકોમાં અકસ્માતની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। વડસર બ્રિજ નીચે વધુ એક ભૂવાનું નિર્માણ થવા પામ્યું છે। અહીંયા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરી ચાલી રહી છે। પ્રોજેક્ટના પિલરની બાજુમાં માટી ધસી પડતા ભૂવો પડ્યો હતો। અંદાજિત 100 ફૂટ ઊંડો આ મોટો ભૂવો પડ્યો છે। ભૂવામાં ભરાયેલા પાણી કાઢવા માટે પાઇપો મૂકવામાં આવી છે, ત્યારે આ પાઇપોમાં પણ ઠેક ઠેકાણે કાણા પડ્યા છે। જ્યારે આ વિસ્તારમાં પડેલા ભૂવાના કારણે લોકોમાં અકસ્માતની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। જ્યારે બીજી તરફ કોર્પોરેશન દ્વારા બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરી કરવા જણાવ્યું છે, જ્યારે એકબીજાને કામગીરી માટે ખો આપવામાં આવી રહ્યા હોવાનું સુપરવાઇઝરે આક્ષેપ કર્યો હતો। हमारा काम तो चल ही रहा है, ठीक है, बुलेट ट्रेन का, बट वही है कि सुबह हमको 6 बजे पानी का फ्लो आता है, 6 बजे से 7 बजे के बीच में, ठीक है। तभी हमको ये पानी पूरा कुलप यानी मिट्टी जो है वो कुलप्स हुआ और तभी हमको पता चला कि ये पूरा गड्ढा भर गया। अब हमारी ओर से प्रोसीजर यही करना था कि हमको पानी निकालना है और जो भी है रिपेयरिंग करवाना है, वो तो बात हुआ है, ठीक है। बीएमसी एजेंसी से भी बात हुआ है। उन्होंने बोला एजेंसी को बुला के आप अपने ओर से भी ट्राई करिए, हम भी ट्राई कर रहे हैं। कॉरपोरेशन मना कर रही है क्या काम करने से? करने का तो बोल रहा है, पर वो प्रेशर ऐसा है कि भाई हम पे ही बोल रहा है कि ऑलमोस्ट आपके भी एजेंसी आप भी ट्राई कर लीजिए, ऐसा कर। नहीं, आपका काम है पानी का लाइन लीकेज करने का, रिपेयरिंग करने का? नहीं, ऐसा नहीं, बट वो हमको ऐसा बोला है। से टूट गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। वो हमको बोला है कि भाई ये आपका काम चल रहा है, आप अभी ट्राई अप करिए, कुछ आपसे भी हो सकता है तो वैसे करिए। ये पानी की लाइन थी पूरी? ये जो दिख रहा है ना मिट्टी, वो पूरा कुलप्स हुआ है। अब उसमें हमको भी आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं।